welcome everyone to Literature Unlocked. I am Komal Kumari and here we decode literature of all kinds and even learn spoken English. आज की हमारी वीडियो है Chaucer and his works पे. Imagine a time before Shakespeare. No iambic pentameter, no blank verse, no rich, living, breathing English language on pages. कैसा होगा वो ज़माना? और अब इमेजिन करिए वन डेयरिंग मैन टू राइट पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन लैटिन, नॉट इन फ्रेंच, बट इन इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. That man was Geoffrey Chaucer. Today we explore Chaucer's life, his major works, and why over 6 centuries later he is still called the father of English poetry. But first question, who was Geoffrey Chaucer? Geoffrey Chaucer was born around 1343 in London during the Middle Ages, a period dominated by feudalism, church, and rigid social hierarchies. Unlike many medieval poets, Chaucer was not a monk or a priest. He lived an active public life. He worked as a courtier, a diplomat, a civil servant, and later controller of customs at Port of London. This exposure allowed Chaucer to meet people from all social classes: knights, merchants, clergy, laborers, and women from varied backgrounds. This real world experience becomes the backbone of his greatest work, the Canterbury Tales. Chaucer के literary influences क्या थे? He was deeply influenced by French literature, that is courtly romance, Italian writers like Dante, Petrarch, and Boccaccio, and classical authors like Ovid and Virgil. But Chaucer, he did something revolutionary. He blended European tradition or European literary sophistication with English realism. Instead of idealized hero, he gave hypocritical monks, corrupt church officials, lusty wives, worldly merchants, and deep human characters. चौसर की कुछ मेजर वर्क्स हैं द कैंटरबरी टेल्स, जो कि चौसर का मास्टरपीस है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर. उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है. इट इज़ अ फ्रेम नरेटिव. A group of 30 pilgrims travel from London to Canterbury. They agree to tell stories to pass the time. Each pilgrim represents a different social class. The Chaucer planned to write 120 tales, but he only completed 24 tales. The plan was that each pilgrim will tell 4 stories, 2 while traveling from London to Canterbury and 2 while returning back from Canterbury to London. But क्योंकि Chaucer सिर्फ 24 stories complete कर पाए हैं, that's why it is an incomplete tale. Now, the general prologue of Canterbury Tales. ये बहुत important है for net, so please listen it carefully. The general prologue introduce करते हैं every pilgrim को through vivid character sketches. This section is important because it reflects medieval society. Introduces irony and satire, exposes moral corruption, especially in the church. For example, the monk who loves hunting instead of prayer, the pardoner who sells fake religious relics, and the wife of Bath who is bold, outspoken, and revolutionary in her views on marriage. Chaucer does not directly judge his characters. वो directly नहीं बताता है कि उसके characters कैसे हैं, but वो उनके actions और उनके words के through reveal करता है कि उनका nature कैसा है. Some of the types of tale that are given or presented in Canterbury Tales are Knight's Tale, that is chivalric and romance; Miller's Tale, that is bawdy fabuleux; Wife of Bath's Tale, that is feminist discourse; and Pardoner's Tale, that is moral hypocrisy. जितने भी कैरेक्टर्स का टेल कैंटरबरी टेल्स में दिया गया है वो सब उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो वैरायटी ऑफ टेल्स हैं कैंटरबरी टेल्स में, इट मेक्स द टेक्स्ट मोर इंटरटेनिंग एंड socially critical. Now the next work of Chaucer is Troilus and Cresside, जो कि एक tragic romance है which is set during the Trojan War. इनके themes हैं fate and free will,
Psychological realism, love and betrayal. What makes the text special? It is deep human introspection. इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोकाशो, बोकाशो का भी सेम वर्क है, उसमें से इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने ये वर्क लिखा है. एक सीरियस फिलोसफिकल टोन भी है इस वर्क का. Many scholars consider this work as the finest poetic achievement of Chaucer in terms of its structure and emotional depth. The next work of Chaucer is the Book of Duchess, which is an elegy, and it is composed to mourn the death of Blanche of Lancaster. It uses dream vision form and it explores grief, loss and consolation. The poem shows Chaucer experimenting with French poetic tradition. The next works are The House of Fame, which explores reputation and fame, and Parliament of Fowls, which discusses love, choice and debate through birds. The characters में यहाँ birds हैं जिनके थ्रू debate होता है. Topics like love and choices are discussed. ये जो works हैं Chaucer के, this reveals intellectual curiosity of Chaucer, his playfulness and his philosophical thinking. चौसर का लैंग्वेज स्टाइल कैसा था? आई मीन चौसर की लैंग्वेज और उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी? चौसर मिडिल इंग्लिश में लिखते थे, मेकिंग लिटरेचर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. एंड इनके की फीचर्स थे, ही यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर, द इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोइक कपलेट. नाउ यू शुड रिमेंबर दैट हीरोइक कपलेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर. रिच इमेजरी एंड आयरनी एंड कन्वर्सेशनल टोन होता था चौसर के वर्क का. Without Chaucer, English poetry might have remained a second literary language. मैंने जैसे कि कहा, French was the language of elite during that time and Latin the language of church. English was only the language of common people. और अगर Chaucer इंग्लिश में नहीं लिखते तो शायद इंग्लिश एक सेकेंड लिटरेरी लैंग्वेज बन जाती इंग्लैंड की. इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये एरा और चौसर एंड उनके वर्क्स. ना चौसर इतने ज़रूरी क्यों है वो तो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है, बट स्टिल एज अ रीकैप, चौसर मैटर्स बिकॉज चौसर एक तरह से इंग्लिश को लेजिटिमाइज करते हैं एज अ लिटरेरी लैंग्वेज. ही पोर्ट्रेज सोसाइटी विथ ऑनेस्टी एंड ह्यूमर. मतलब सिर्फ ब्रूटली रोस्ट करना उनका काम नहीं था, वो ह्यूमर का इस्तेमाल करके सोसाइटी को क्रिटिक करते हैं. वो ह्यूमर का इस्तेमाल करके ऑनेस्टी पोर्ट्रे करते हैं, सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स के थ्रू. वो ब्लेंड करते हैं रियलिज्म विथ आर्टिस्ट्री एंड ही इन्फ्लुएंस राइटर्स लाइक शेक्सपियर एंड T.S. एलियट. चौसर ने सिर्फ स्टोरीज नहीं लिखी है, उन्होंने लोगों को लिखा है. He has written people and influenced many great writers that were going to come in next eras. So if this video helped you understand Chaucer and his works, like, share and subscribe for more literature made more clear and engaging. अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंटरबरी टेल्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, do comment Canterbury Tales. Thank you and see you soon.